envisaged in the Act. And the GST Council has had several discussions on this. It is not envisaged in the Act to extend the compensation cess collection beyond 30th June 2022. That extension, which I explained, which is going on till 26, is only as regards borrowed money which has to be paid back. That borrowing was purely for paying the compensation. So that is the true position, one. Second, compensation cess not being paid. I've explained this a lot of times. I'm seeking your indulgence so that I can explain it again. 30th June 2022 was the last date when we started collecting, kept collecting the cess, and with the cess collected, we are paying for the states. Paying for the states, the compensation happens every time the state produces with the AG's certificate, saying this is the compensation due to us, please pay it. The moment that comes in with the AG's certificate, we pay it. Honorable Member N.K. Premchandran comes from Kerala. I would like to give him the factual position as of now. Kerala has, AG's certificate has been received from Kerala 4 years, except for 22-23 first quarter. 22-23 first quarter, Kerala has not sent the AG's certificate as yet. Any payment will be processed now that the AG's certificate has been received. And that is the principle on which compensation cess is being given to every state. Every other state has probably given, except for Nagaland, which has not given AG certificate for any year beginning 2017-18. Sikkim has not given for 3 years. West Bengal has not given for 4 years, and so on. It varies. The position varies. So the moment the claim comes along with an AG certificate, we release the compensation amount, sir. We are not holding back compensation amount for any other reason except if AG certificate has not reached us. अजय रंजन जी, ऐसे तो डिटेल में जवाब दे दिया माननीय मंत्री जी ने. Madam, sir, the devolution of taxes, including GST, everything has been prescribed by our constitutions, and it is a constitutional mandate which is to be abided by you. But madam, don't take it otherwise. There is a general perception being grown across the nation that non-BJP ruled states are being deprived from having their legitimate due. The latest example is Karnataka, where the entire ministry has been agitating against the indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished by sheer discrimination being played from your ministry. I would like to know whether state government of Karnataka has been deprived from obtaining their legitimate due, because few months ago the situation was not there. That time everything was going hunky-dory. But after the new installation of government, because the non-BJP government has been assumed there, since then the trouble has been started. What is the reason behind this kind of deprivation? Tamil Nadu also. Sir, devolution to the states. This is beyond, of course, this question, sir, but still, because it's an important question on which the leader of the opposition is asking a question, I would certainly respond. Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. IGST is collected because it involves a lot of interstate payments. It is periodically reviewed also by the GST Council. It is because states should get the money in their hand, roughly, grossly, 50% is divided, and then periodically it is readjusted to actuals.
So if a state were to get 41 and not 50, adjustment happens. If a state were to get 52, adjustment happens. So every now and then, when money gets accumulated under the IGST, it is divided grossly at 50-50 to all states and gets reconciled over the time according to the data that comes up. The CGST is divided as per the advice, 42% goes of the Finance Commission. So if this is direct tax, GST, sir, direct taxation is completely determined by the proportions decided and suggested and accepted and implemented by the central government. Now, of course, some states, and this rate fixation is nothing to do with the government of India. Rate fixation as to how much should go to a state is done by the Finance Commission. And does the Finance Commission sit in one place and take a call on it? No, it goes all over, meets with every state government, talks to them, and only then submits the report. I want to humbly submit before you so that Adirji, please understand, I don't have the right to change as per my whims and fancies, that I like a state or this state is against my party politics and therefore, no way. I have no role. In fact, I would have to follow it 100%. And that's what I've done in my term here. And that's what every finance minister does in their term. Finance Commission giving recommendation, that which I have to implement, it is done without any kind of fear or favor or anything like that. So this apprehension that some states are being discriminated against is a politically vitiated narrative, which I'm sorry to say, vested interests are happy to go about saying it. There's just not a possibility that any finance minister can intervene to say, I don't like this state, stop the payment. No way. It cannot happen that way. The systems are well placed that the recommendations of the Finance Commission for every month's devolution will have to happen. But now that Adirji himself has said, politically you're doing this, I want to also say, and I want to. All right, let me answer your first question and also join you on your second additional point. Sir, Adhir Ranjan ji saying in this first place only said 6 months, till 6 months it were all hunky-dory, now it's not. Can I, seeking your indulgence, say, till 6 months if it was hunky-dory, what's going wrong now? Have you started spending on items which you were not supposed to spend? I'm not even questioning that, do spend it, but don't put the blame on me. Don't put the blame on the center because it goes by the rule book. It has to give it, it will give. If the expenditure are going into areas which cannot be sustained by your budget, I'm not answerable for that. So, Adirji, I'm sorry, till 6 months ago, which government was there, it's not my role now to talk. Hunky-dory it was. No, it's not. Introspect, please. You're saying that, I didn't say that. You're saying that. Sir, therefore, Adirji, I respect him, I give him detailed answer. But if there is an insinuation that it's because me holding money here, I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Sir? Okay. Finance Commission is now, one minute. Please. Oh, surely, I'll certainly sit with the Karnataka Minister, Deputy Chief Minister, Honorable D.K. Shivkumar ji came and met me. He told me about the difficulties. I've heard him. I've given him the matter-of-fact answer. It's not as if I don't want to meet state authorities, state ministers. I can't do as long as the Finance Commission doesn't tell me to do. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion
Adir ji, please don't imagine that I have a discretion to play around with Finance Commission's recommendations. Please talk to the Finance Commission. I'm not talking about generosity. Sir, I'm talking about Finance Commission's recommendation, which I follow to the last word. I'm not talking about anybody's generosity. So let us please talk on the terms. Finance Commission gives me a recommendation, I follow it. Now suddenly Adirji says, meet up the state. I've met up the state. I'm not doing anything is the next allegation. I can't do anything is my answer. No, why don't you meet them? I've met them, but you're not doing anything. I can't. क्वेश्चन नंबर 23 थी उमेश जादव जी। क्वेश्चन नंबर 23 सर। माननीय सदस्य। सर, आई हैव रिसीव्ड द रिप्लाई में ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज नॉट रिसीव्ड प्रपोजल फॉर इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिकली गोंड कुरुबा कम्युनिटी इन एसटी लिस्ट ऑफ कर्नाटका। सर, माय क्वेश्चन वाज probably not understood properly, or I would have not asked properly. Sir, Karnataka government has recommended, sir, in Karnataka, Gulbarga, Yadgir, and Bidar, Kuruba is Gonda, Gonda is Kuruba. These are synonymous terminology. Karnataka government has recommended 4 times for the inclusion of these community in ST. So I am giving the references. The government of Karnataka has sent the cabinet approved note to the central government on 25/12/1996 and 10/2/1997 with regard to the district of Bidar, undivided Gulbarga, for the considering the tribes by the name Kuruba has synonymous of Gonda, scheduled tribe for these districts. In this regard, the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, vide its letter dated 21/4/1997, requested Government of Karnataka, Department of Social Welfare to send the ethnographic report on Gonda Kuruba of these districts. The Tribal Research Institute of Government of Karnataka conducted an ethnographical survey study on Gonda Kuruba and submitted its report to the Government of Karnataka. The report approved in the state cabinet on 3/3/2014 and recommended to the central government on the 4/3/2012 for consideration. Again, the Secretary of Government Social Welfare Bengaluru also submitted TRI communities views on the report of the Karnataka Ministry of Tribal Affairs, Government of India on 5/9/2014, 12/5/2017, 18/5/2018, 31/5/2020 for further necessary action. However, ORGI, without getting into merits of the ethnographic report and considering the irrelevant literature, has raised queries with the Ministry of Tribal Affairs. Same has been taken up with the Government of Karnataka. Government of Karnataka has addressed all the queries and recommended again for consideration. ORGI again asked additional information from ethnographers. Comments of ORGI and justification of ethnographic report to include the term Kuruba has synonymous Gonda Shell tribe in Bidar, Kalburgi, and Honorable Yadgir member, district, Karnataka please. submitted, sir. Sir, this is very burning and serious issue, sir. Recently, 2 days back, एक हमारे गुलबर्ग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो साइकिल टायर ट्यूब पंक्चर करता है, उसकी बेटी मेरिट में आकर शी वाज एम्प्लॉयड, उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सर, उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और वो he died of heart attack. Day to day these things are happening, sir. I sincerely request Gonda and Kuruba are same in only 3 districts. Population भी ज्यादा नहीं है हमारे पास, सर बहुत कम population है. कलबुर्गी, बीदर एंड यादगिर में कुरुबा, गोंडा कुरुबा, इनको धनगर भी बोला जाता है सर. इनको कंसिडर करने के लिए मैं सिंसियरली आपके जरिए मैं हमारे अर्जुन मुंडा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं. और हम बहुत बार डेलीगेशन गए सर, एक बार नहीं कम से कम 50 बार उनके पास गए सर. हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, माननीय मंत्री जी, बहुत गरीब पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए मदद करना है सर. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उनको उत्तर दिया गया है.
उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि गोंड कुर्बा से संबंधित प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव कुर्बा से संबंधित है और 2 प्रस्ताव है। उसमें एक है कुर्बा समुदाय को जिसका क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में, और दूसरा है कि कुर्बा को गोंड के पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिमस वर्ड के रूप में सम्मिलित करना। इस मामले में जो पत्राचार हुए हैं उसके बारे में माननीय सदस्य ने खुद बताया है, क्योंकि इसके एक मोडालिटीज है, एक पूरे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूलिंग करने के लिए जो भारत सरकार ने मानक तय किया है, उन मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के रिपोर्ट आने के बाद में जांच होती है, और जिस स्तर पर ऐसे विषय आते हैं जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उस स्तर से पुनः मंत्रालय के माध्यम से वहां भेजी जाती है। तो ये जिस वर्ग के बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में पहले आरजीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो खुद मंत्री माननीय सदस्य इससे अवगत है, और अभी ये कुछ स्तरों पर विचाराधीन है जिसकी सूचना अभी तक मंत्रालय को नहीं मिला है। आगे जब मिलेगा तो उसका सूचना हम माननीय सदस्य को अवश्य उपलब्ध करा देंगे। सर और एक सर, हमारे पास कोली कब्बली के बारे में भी हमने बहुत बार ये मैटर रेज किया है सर। माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू ऑनरेबल इज, in Karnataka, Koli, Kabalga and its synonyms are recommended by the state government for Karnataka for inclusion in ST list of Karnataka. Currently, it is in RGI for evaluation. Sir, currently some communities like Tokre Koli, Dhor Koli, Koya, Kolcha, Kolga, Raj Koya, Bin Koya are included in the ST list of Karnataka. But the remaining leftover from the Tokre Koli, Koya, Dhor Koli, that is Koli and Kabalga, are necessary to include in the list of ST at the earliest. It is my once again sincere request. Minister should sympathetically consider and take decision early, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों के ऐसे बहुत सारे मामले मंत्रालय के विचाराधीन और उससे संबंधित विभिन्न स्तरों पर सारे लोगों के कमेंट्स के लिए आते हैं। उसमें जो कहा है वो अंडर प्रोसेस विभिन्न स्तरों पर है। कर्नाटका के मामला में गंगा माथा का है, हनुमत्था का है, जैसे कोली का उन्होंने कहा, उसी तरीके से कंडुवडियान का है, मलयाली का है, कई ऐसे समूहों का है जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। ये ऐसे मामले हैं जिस मामले को जो प्रावधान है उसके अनुसार देखे बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी औपचारिकता के जो मापदंड है उसके बारे में लगातार चर्चा हुई है, और 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके अनुसार इसको देखना बहुत आवश्यक है। श्री फ्रांसिसो सर्दिना। There are 3 communities in Goa, Velip, Gowda and Kundi, which are included in scheduled tribe. There is a permanent request from government of Goa to include Dangar community, which is much more backward than these 3 communities who are included in the list. So please, I would request the government and the minister to please consider this and include this Dangar community in the scheduled tribe list. प्रश्न से संबंधित इसलिए नहीं है कि कम्युनिटी के कई राज्यों से संबंधित है, इसके अद्यतन स्थिति से माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूं। श्रीमती सुप्रिया सुले। जिस राज्य से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र में, मराठा, धनगर और लिंगायत और मुस्लिम समाज का आरक्षण
कि आंदोलन सब जगह चल रहे हैं और धनगर समाज का आरक्षण को प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा था। पिछली बार भी सर मंत्री जी ने उसके बारे में भी जवाब दिया था और उनके पहले दूसरे जवाब में उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं राज्य से, लेकिन उस पर कमीशन लगता है, तो कुछ टाइम बाउंड मैनर या कुछ जवाब हाँ या ना में मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये चारों वो देना चाहती है, तब वो दिल्ली कागज आए कि नहीं और निर्णय कब होगा? थैंक यू सर। जहाँ तक धनगढ़ समाज के विषय में है, क्योंकि माननीय सदस्य को इस बात से बहुत अधिक वो स्वयं अवगत है कि इन मामले में राज्य ने एक बार बहुत पहले प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया। अब प्रस्ताव जब राज्य सरकार के पास है तो केंद्र के पास विषय विचार के लिए कैसे हो सकता है? तो क्योंकि ये राज्यों की सूची बनती है और राज्य के अनुशंसा के आलोक में बाकी कार्रवाई प्रारंभ होती है। श्री निशिकांत दुबे जी। बात सभापति महोदय 2014 में एक कमेटी बनी, ऋषिकेश पांडा कमेटी, और उसमें सारे लोग जो आरजीआई, राज्य सरकार, SC/ST कमीशन, उन सबों के मेंबर उसके सदस्य थे। और उसने एक रिकमेंडेशन किया कि कई एक ऐसी जातियां हैं जो कि ट्राइबल थीं और किसी कारणवश भूलवश जो है वो छूट गई। उसमें से 2 जाति हमारे यहाँ है झारखंड में, खेतौड़ी और घटवाल। जब माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने खुद ही 2 बार इस प्रपोजल को भेजा है। संयोग बढ़िया है कि ऋषिकेश पांडा कमेटी की भी रिपोर्ट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। ये खुद मंत्री हैं। क्या वो दोनों जातियां जो किसी भूलवश छूट गई, और ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें बिना किसी नियम कानून के उस कमेटी के आधार पर आप उसको ST का स्टेटस दे दीजिए, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि उसका जवाब यही आएगा कि राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पांडा कमेटी के आलोक में क्या उसको ST का स्टेटस हम दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि जो राज्य सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आई गई रिपोर्ट पर जनजातीय मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि सबसे पहले आरजीआई के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उसके बाद कई मंत्रालयों से विचार विमर्श करते हुए मंत्री परिषद में लेकर के आती है। यह एक विधि निर्धारित की गई है, प्रावधान किया गया है। अब पंडा कमेटी एक गठित हुई थी, जिस पंडा कमेटी के माध्यम से ये बताया गया, जिस तरीके से लोकुर कमेटी 1962 में बनी थी, उसी तरीके से एक पंडा कमेटी बनी थी जिन्होंने कुछ चीजों को सामने लेकर के आया था। लेकिन जब इस पर विचार हुआ तो यह हुआ कि जो हमारी विधि निर्धारित की गई है, जो गाइडलाइंस बनाई गई, उस गाइडलाइंस के आधार पर ही, अन्यथा कई कमेटी इस तरह की बनेगी और उस कमेटी के माध्यम से शेड्यूलिंग का, क्योंकि आर्टिकल 342 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके मापदंड को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी कमीशन के माध्यम से आए रिपोर्ट के माध्यम से शेड्यूलिंग का कार्य करे, बल्कि इसके जो विभिन्न स्टेजेस है उसके आधार पर ही इसको लाना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए फिर राज्यों को भेजा गया। जहां तक घटवार और खेतौरी की बात है, घटवार और खेतौरी का इसके पहले कई स्मारित किया गया है और लगातार पूछा गया है, लेकिन राज्य की तरफ से अभी तक इस मामले पे कोई उत्तर मंत्रालय को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री के सुब्बा नारायण। नंबर 24 माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मेंबर,
I have two supplementary questions, sir. One is whether there any borrowing limit fixed to the state and center. If so, the details thereof. Another one is whether any state government requested for allowing them to borrow beyond the limit in cases emergency. If so, the details, sir. उधारी का संबंध है। सभी राज्य सरकारें अपना FRBM एक्ट बनाती हैं और उसके तहत उधारी लेने का काम वो करती हैं और भारत सरकार से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल भारत सरकार इतना ध्यान रखती है कि जो FRBM का एक्ट है उसके ज़्यादा अगर लेता है तो भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि किसी प्रदेश ने मांग किया है, प्रदेश मांग करती रहती है, लेकिन जो भारत सरकार FRBM एक्ट है उसके तहत भारत सरकार प्रदेशों को अनुमति देती रहती है। डॉक्टर शौकत राय। Sir, the minister has given a detailed reply. But the fact is that due to high level of debt of the government, the industry, the investment came down. It was as high as 38-39% of the GDP. It came down to 32% of GDP in 22-23. The reply states that overall investment rate in economy consolidated at 29.2% in 22-23 and has improved to 29.8%. So obviously the minister in the reply has stated that this was due to one, pandemic and low revenue collection, and two, the NPAs in the bank which the government is trying to set right. May I ask from the Honorable Minister as to when, in the government's estimate, investment rate will go up to 39% as it happened to 2011-12, and what are the further steps being taken by the government in this regard? Investment rate is very low and all the government's tall talk has not resulted in investment going up. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक निवेश का सवाल है उसका विस्तार से उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है, लेकिन अगर देखें जो हमने उत्तर में भी बताया है कि इधर जो भारत सरकार ने तमाम सुधार किए हैं, चाहे वो IBC कोड का हम लोगों ने लाया, चाहे GST को लेकर के आए, और भारी मात्रा में जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं उसको अगर देखें तो लगातार निवेश में कोविड के बाद में जो कोविड के समय जो घटोतरी हुई थी, आज निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित तौर से जो 2011 का लक्ष्य है बहुत जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। श्री A. आरिफ। Thank you, Speaker, sir. Honorable Finance Minister stating in her reply about the CapEx loan, which is the industry loan for 50 years. I would like to know, in this regard, will include this loan allowing this borrowing limit of the states prescribed by the Finance Commission or FRBM Act. I request you to exempt the CapEx loan from the borrowing limits of the states. Honorable Finance Minister is well know about the financial constraints of the states after the GST Act. I have a simple and important doubt about regarding the GST Act. Honorable Finance Minister is replying by reply. We cannot amend the GST Act. If you have any interest to support the states, you can amend the GST Act, come before the amendments, we will support you. So I request to Honorable Finance Minister, consider the request to exempt the borrowing limit of the state for the CapEx loan.
माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक जीएसटी के में संशोधन करने का सवाल है, जीएसटी की अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था काउंसिल है, उसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ही लेती है। जहाँ तक कैपेक्स बढ़ाने का सवाल है, अगर देखें कि भारत सरकार ने कोविड के समय भी, जब हमारा सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, उस समय भी भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन लेकर सरकारों की मदद करने का कार्य किया है। और अगर आप देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का अपना कोई क्षेत्र नहीं है। उन सारी योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 श्रीमती पूनम महाजन। पटल पर दिया गया है। राम शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती, जो कि साक्षरता दर के मामले में देश में सबसे पिछड़े जिलों में आता है, यहाँ सामान्य और उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार ने देश के पिछड़े और आकांक्षी जिलों में उच्च शिक्षा में सुधार और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की कोई योजना बनाई है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौरान सारे देश में सभी स्तर के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जब उच्च शिक्षा क्षेत्रों की बात हम कहेंगे तो इसमें पीएम उषा जो पहले हम रूषा नाम से चलते, रूषा 1, रूषा 2, अभी 2023 जून में पीएम उषा हमने लॉन्च किया और इसमें सभी राज्यों ने मऊ किया, लेकिन 5 राज्यों जो है बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों इससे नहीं जुड़ा है। उनको क्या मालूम नहीं शिक्षा की जरूरत है क्या नहीं। तो इसमें जो फोकस है जो एनबी को द्वारा, और फोकस डिस्ट्रिक्ट भी है। फोकस डिस्ट्रिक्ट वो हमारे जो स्टेट्स वही चयन करते हैं, और इसके साथ साथ जब सारे एक्सेस, इक्विटी और जो उसको एक्सेलेंस, उसको बारे में भी आगे चले, इसके बारे में चर्चा करके स्टेट के द्वारा प्रपोजल भेजते हैं। और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी पूरा स्टेट ही रहेगा, रैशनलाइज्ड स्टेट भी कर सकता है, यूनिट ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ कोई हार्ड कंपोनेंट और सॉफ्ट कंपोनेंट के बारे में अलग से कुछ नहीं किया, हम सारे इसके लिए कर रहे हैं। श्री संजय सेठ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि पीएम रूषा स्कीम में हमारे राज्य झारखंड में उस कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, और हमारे रांची में खिलाड़ी में कोई सेंट्रल स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था है क्या, और रांची जिले में कोई केंद्रीय विद्यालय और खोलने की जानकारी है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो हमारे वहाँ झारखंड में पीएम रूषा में भी जो अच्छे काम भी हुआ था, उसमें 2018-19 में 27 प्रोजेक्ट हुआ, 27 यूनिट्स, और 2019-20 में 9 प्रोजेक्ट्स हुआ। और इसके साथ साथ जो पीएम उषा नया चयनित हुआ, पीएम उषा 2023 जून में लॉन्च हुआ, इसमें भी झारखंड में 12 डिस्ट्रिक्ट चयनित हुआ। ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है चातरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खुंती, लातेहार, पलामू, साहेबगंज, सिमदेगा और वेस्ट सिंहभूम। ये सारे जगह में हमारे जितने सारे व्यवस्था है, जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च on universities, grants to strengthen universities, grants to strengthen colleges, new model colleges, and gender inclusion and
जेंडर इंक्लूशन के लिए भी जो एक भी हम करते हैं। और इसके साथ साथ जो गिरिडीह में जो हुआ, इसमें गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय एक भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय भी एक है, और मद्रासा रिकॉग्नाइज, मद्रासा अनरिकॉग्नाइज्ड भी है 13, और इसके साथ साथ जो 95 प्राइवेट अनएडेड स्कूल वो भी हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, राव इंद्रजीत सिंह जी। Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। So sorry. With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7, श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9, डॉक्टर सुभाष सरकार जी। अध्यक्ष